Hello, good evening, everyone. We will just hold on for a minute or two for our participants, and then we will begin the session. All right, then. Good evening, everyone. My name is Archita, and I'm a part of FIAPO, the collective voice of the animal rights movement across the country. We work with over 180 member organizations and with over 1,000 volunteers spanning across 90 cities. I will be a moderator for today's session, and I welcome each and every one of you to this webinar on the fundamentals of animal protection laws, a guide for animal protectors, where we will explore the laws, the execution, the legal processes, implementations, and a lot more than that. Thank you for joining us here today. I would like to take a moment to welcome and introduce our panelists for the evening. First, we have Kamna Pandey here with us today. She is an animal communicator, a vegan, a Reiki master, and a healer for extreme behavioral and aggression problems in animals, as well as an SPCA member. She has also undertaken animals rescue after the Kedarnath tragedy. She has also started the worldwide Kerala tourism boycott movement after the 2015 mass culling. She has started the India Unites for Animals movement to support the Animal Welfare Bill for changing the age-old PCA Act 1960, and has also played a key role in the Save Avni campaign. Thank you, Kamna, for being here today. It's an absolute pleasure to have you here. Same here. Wonderful. Next, we have Varnika Singh here with us. Varnika is working in the capacity of the legal manager in FIAPO. She has over a decade of experience and a vast storehouse of knowledge. She has also done her master's in the Masters of Laws in the National Law University. And some of her focus areas involve advice on different legal issues related to animals, deliberations on animal issues, litigation, drafting, vetting court petitions, and other legal instruments. It's an absolute delight to have you, Varnika, and I welcome you both to our webinar today. Thank you, Archita. Thanks so much. Wonderful. So before we move on, I will just make a very quick announcement. This is to all our participants. Please feel free to write all your questions in the Q&A icon, which you'll find at the bottom of the screen. And you can also write the questions in the chat option. We will be taking them towards the end of the session. So without further ado, I will be handing over the session to you, Kamna. You may please share your screen and please go ahead. Thanks. Okay, so hello everybody, and let's have the screen. Okay, so is my screen visible? Yes. Okay, great. So hello everybody, and I think everyone who's listening to me here and is attending this webinar is someone who is interested in animal welfare and someone who wants to work to alleviate animals of their problems. I'll be talking both in Hindi and English. If at any point you want me to change the language, please do tell me. So हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हमें जानवरों के साथ जो कुछ भी होता है, क्रूल्टी होती है, उसे देख के बहुत तकलीफ होती है. And sometimes we do not know कि हमें क्या करना चाहिए. तो इसमें सबसे पहले I would like to say something कि हमारे हर किसी के ऊपर एक responsibility है. हम किसी NGO, किसी एक्टिविस्ट या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे सिर्फ टैग कर दे के हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होता है. इनफैक्ट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट ही होता है यहाँ से. आपको कोई केस पता चलता है, चाहे आपके अपने पर्सनल केस हो, चाहे कोई भी केस हो,
उसको कोशिश करिए कि मैक्सिमम जो चीज है वो आप अपने एंड से करें. डू अंडरस्टैंड वेदर इट इज मेनका गांधी मैम और इट इज FIAPO और इट इज एनी बिगर activist of your city or Peter, anybody for that matter, जिसको आप usually reach out करते हैं. इनके पास हजारों केसेस आते हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी आपका पर्सनल, वी कैन हेल्प यू इन योर फाइट, वी कैन नॉट फाइट योर फाइट. ओके, तो ये जो वेबिनार्स करे जाते हैं ये इसी पर्पस से करे जाते हैं कि हम आपको एम्पावर कर सके, आप अपने राइट्स जाने, आप एनिमल्स के राइट्स जाने, आप कानून को जाने. वंस यू नो द लॉ, वंस यू नो योर राइट्स, ये जो आपको पुलिस और बाकी लोग इधर उधर घुमाते फिराते रहते हैं ना, दे कैन नॉट डू दैट. ऑल द एक्टिविस्ट, FIAPO, पीटर, एनीबडी, दे are only as good as their knowledge of law. वो कुछ ऐसा नहीं है कि they hold any big authority in terms of legal entity. वो सिर्फ जानते हैं प्रोसीजर क्या है, लॉ क्या है, वो आप भी जान सकते हो. उसके बाद आप कहीं फंसो तो डेफिनेटली रीच आउट टू देम, अगर उसके बाद भी ना हो. बट ट्राई मैक्सिमम कि आप जितना कम से कम बर्डन कर सको उतना आप कम से कम करो. सेकेंड थिंग इज कि जब कोई केस रिपोर्ट होता है उसमें मोस्टली आप चाहते हैं कि FIR कोई और आके आपकी सिटी में फाइल कर दे. दैट इज नॉट पॉसिबल. कोई दिल्ली में बैठ के आपको एडवाइस दे सकता है, आपके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से कॉल करके बात कर सकता है, बट देयर समबडी नीडेड जो फिजिकली एक FIR लेके जाके दर्ज कराए. आप यूजुअली जो एक्सक्यूजेस हम लोग सुनते हैं वो ये होता है कि मेरा नेबर है, आई डू नॉट वांट टू टेक पंगा विद दिस नेबर ऑफ माइन, वो अच्छा आदमी नहीं है, गुंडा है. प्लीज अंडरस्टैंड कि जो भी इंसान एनिमल्स पे क्रूल्टी कर रहा है वो अच्छा इंसान नहीं होगा, वो यूजुअली गुंडा प्रवृत्ति का ही होगा. यूजुअली आपके एरिया में कोई नोएडा से आके नहीं क्रूल्टी करेगा, आपके ही नेबर्स होंगे जो क्रूल्टी करते हैं. सो जो लोग भी फाइल करते हैं वो अपने नेबर्स के ही खिलाफ करते हैं. एंड ट्रस्ट मी, एक बार पुलिस के पास केस चला जाता है तो जो भी आपके फियर्स है ना कि वो मुझे बाद में ज्यादा तंग करेगा, ऐसा नहीं होता है. क्योंकि आपके अगर दोबारा से वो तंग करता है ना, आप वापस पुलिस के पास जाओगे फिर तो वो बच ही नहीं सकता, क्योंकि तब आप एक कंप्लेनेंट होगे और कंप्लेनेंट को हरास करने का केस चल जाएगा उसके ऊपर, राइट? सो बी fearless, and if you do not stand up for animals, nobody will. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले आप लेने को तैयार हो तभी आप आगे बढ़ो, वरना फिर आप हैप्पीली सी एनिमल्स गेटिंग बीटन अप एंड लिव विद दैट गिल्ट. सो I really want everybody अपने fears को शेयर करके आगे आके FIR फाइल करो. जब भी कोई केस होता है सबके लिए we will talk about it, लीगल एक्शन लो और एक्शन में खुद इन्वॉल्व हो, उसके बाद आप मदद मांगो. Now we come to the first thing कि what is cruelty. हम किन चीजों में अक्सर ये होता है कि हमने कुछ देखा और हमें देख के तकलीफ हुई, बट वी डू नॉट नो, हम लॉयर्स नहीं हैं, वी डू नॉट नो क्या इसके लिए हम कोई एक्शन ले भी सकते हैं या हम सिर्फ इंसानियत के नाते दुहाई दें कि भाई ऐसा मत करो, क्रूरता है. सो इंडिया में बहुत ही ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ क्रूरटी है जो बहुत ही वाइड है. इट ऑलमोस्ट covers everything. एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं जो मेन हमारी जो लॉ है जो एनिमल्स के लिए, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ क्रूल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, इन शॉर्ट फॉर्म PCA एक्ट 1960 is what we use. इसके हिसाब से एनिमल्स की डेफिनेशन है एनी लिविंग क्रीचर विच इज नॉट ह्यूमन. इंसान के अलावा कोई भी लिविंग क्रीचर जो है वो एनिमल्स की श्रेणी में आता है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो. Kamna, just a second, can you also start the slideshow? Can we start the what? Slideshow.
slideshow. It's at the top of the screen. Yeah. Where is that? Towards the left, there is a slideshow option in the red bar. I cannot find it. मेरा screen नहीं दिख रहा है क्या? We are not able to view the slideshow actually. It's right there on the left side after home, insert, design, animation, and slideshow, if you're able to view it. Yes, yes. Right, one slideshow? second. Yes. Slideshow. This is the one, right? Yes. Okay. Fine. Right. You can, from current slide, there's a left option there. From current slide at the top. Yes, a little left. Yes, yes, just below, from current slide. Yes, you can start from there. Okay. But it's sort of showing blank. Is it blank? We are able to view the screen, but I'm not able to see the slideshow. Stuti, are you able to see it? I think has it come? No, I can still see the same screen is visible, but not the slideshow. How do we do that? All right, that's okay. Kamna, you can first enable editing. Click on enable editing. Top. Once again. Just above the cruelty provision at the top. Enable editing in the yellow. नहीं आ रहा. Where it says protected view, it says in yellow at the top. इस पे नहीं दिख रहा मुझे वो mute stop video participants वाला बार दिख रहा है, and then the escape करो एक बार. Not happening. Okay, it's gone there. So enable editing. हाँ ऊपर नहीं ऊपर enable editing. Activate के बिल्कुल ऊपर enable editing. It says enable editing. Yellow bar. It's gone. वो enable editing होगा नहीं because इस पे Microsoft है नहीं. अच्छा. एक बार क्लिक तो करो, देखो क्या होता है. Let's see. Let's see, one second. अब क्या हो गया? आपकी स्क्रीन वो चली गई एनेबल एडिटिंग करते ही. स्क्रीन शेयर दोबारा उसको कर दो बस. अब शेयर दोबारा करोगे अब ठीक आएगा. अगेन शेयर. This? Yes. Now it is okay. Now go to that slideshow. Right inside. थोड़ा. Animation के अगला वाला. Okay, slideshow and from current slide. From the current slide, yeah. Okay. अभी दिख रहा है? Yeah. Yes, now it's good to go. Awesome. Great. Okay. So back to where we were. And how do I change it to the next slide? I'm so sorry, guys. Please excuse my challenged knowledge of technology. Yeah. So we've done the definition of animals. And now we come to कि cruelty क्या होती है, ये क्या defined है हमारे PCA Act में. So हमारे PCA Act में एक बहुत ही बढ़िया phrase है कि anything which causes pain or suffering to the animal.
is considered cruelty. कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा कार्य जिससे कष्ट या पीड़ा पहुंचे जानवर को, वो क्रूल्टी में माना जाएगा. एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम की ये एक डेफिनेशन है, which means that and cruelty को time to time एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बहुत सारी चीजों को ये अपडेट करता रहता है कि ये भी क्रूल्टी में आता है, ये भी क्रूल्टी में आता है. वो अलग अलग चीजें अपडेट करते रहता है. एक मोटा मोटा तौर पे अगर हम पकड़े तो आप किसी जानवर को देख के अगर आपको लगता है कि इसे कष्ट हो रहा है, ये पेन में है, या आपको उसे देख के तकलीफ हो रही है उस स्टेट में, तो वो क्रूल्टी में आएगा 99.9%. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको बहुत सारा लॉ नहीं पता है, लेकिन आप देखते हैं कि एक स्कूटर पे या साइकिल पे चिकन्स को उल्टा उल्टा टांग के जो लेके जाते हैं, साइकिल पे बांध के, सारे के पैर बांध दिए. अब आपको नहीं पता कि ये क्रूल्टी में आता है कि नहीं आता है. सिंपल क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो, क्या उस जानवर को ऐसी कंडीशन में कष्ट या पीड़ा पहुंच रही है, नेचुरली पहुंच रही है, देन इट कम्स अंडर क्रूल्टी. ये एक बहुत ही मोटा मोटा आप इसकी डेफिनेशन पकड़ सकते हो, और ये मोस्टली इट 99.9% ये एप्लीकेबल होता है. ओके, so I'll just quickly go through these sections. If any person beats, kicks, okay, I'll translate. अगर कोई किसी को मार रहा है, किक कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है या ओवरड्राइव कर रहा है, मतलब जिस वजन के लिए वो कष्ट में नहीं है उससे ज्यादा वजन उस पे लाद रखा है, या जितने ड्यूरेशन में वो थक जाए उससे ज्यादा ड्यूरेशन पे उसको ड्राइव कर रहा है, ओवरलोड कर रहा है, अगर टॉर्चर कर रहा है किसी तरीके से, या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिससे उसे कष्ट या पीड़ा पहुंच रही है, तो ये सेक्शन 11 ऑफ पीसीए एक्ट का उल्लंघन है. अगर कोई भी इंसान किसी बीमार या किसी वुंडेड एनिमल को का उपयोग कर रहा है, चाहे वो बैलगाड़ी में या घोड़ा गाड़ी में या किसी भी तरीके से, अगर इल या वुंडेड एनिमल का प्रयोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, तो उसको दैट इज अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 11 पीसीए एक्ट. अगर कोई इंजूरियस सब्सटेंस, कोई जहर, कोई भी जहरीली पदार्थ, कोई भी जहरीले पदार्थ के अलावा अगर आप मिर्च खिला दे रहे हैं, ना मिर्च जहरीली नहीं है बट उसको कष्ट होगा उससे, तो वो भी सेक्शन 11 का वायलेशन है. सिमिलरली आप देखते हैं होली में रंग लगा देना, ये सब एक्सप्लिसिटली इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन अगेन द सेम डेफिनेशन कि अगर उसको ये लगाने से कोई भी नुकसान पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है, पीड़ा पहुंचती है, तो वो पीसीए एक्ट सेक्शन 11 का उल्लंघन है. नाउ नेक्स्ट इज कन्वेज और कैरीज इन एनी व्हीकल any animal in such a manner or position as to subject it to unnecessary pain or suffering. जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि किसी भी तरीके से ठूस के गाड़ियों में ले जाते हैं गायों को, बकरियों को, मुर्गों को. आपको अगर दिखता है कि वो किसी भी ऐसे तरीके से हैंडल किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है जिससे उसे कष्ट या पीड़ा पहुंच रही है, तो वो भी सेक्शन 11 का उल्लंघन है. केज में जानवर को रखा हुआ है जिसमें उसके फ्री मूवमेंट के लिए एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ जगह नहीं है, जिसमें वो स्टफ्ड आपको दिख रहा है, आपको विजिबली दिख रहा है कि वो कष्ट में है, वो भी उल्लंघन है सेक्शन 11 पीसीए एक्ट. चेन करना किसी जानवर को, किसी केज में रखना, ये भी है. देन हम देखते हैं कि छोटी रस्सी से बांध दिया, उसके पास मूवमेंट की जगह नहीं है, दैट अगेन सेक्शन 11 का उल्लंघन है. हॉर्सेस को, बुलक कार्ट्स को आप देखते हैं वो विप से मारते हैं, या
जो नकेल डालते हैं या मुंह के अंदर उनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ वो डाल देते हैं, उसमें कांटे कांटे से निकले होते हैं और वो बहुत कष्ट पहुंचता है उनको। नाक के अंदर से वो डाल देते हैं जिसको खींचने से उन्हें कष्ट पहुंचता है। ये सब अलाउड नहीं है, ये सब इलीगल है। विप से, घोड़े की जो विप से जो रेगुलरली आप देखते हो, वो भी इलीगल है। आप अगर एक्शन लोगे तो वो रोका जाएगा। जस्ट बिकॉज वी डोंट नो, क्योंकि हम हमेशा से देखते आए हैं और हमें लगता है घोड़ा गाड़ी में तो चाबुक होती ही है, तो नो, आप उसको रोकोगे तो आप 112 को भी बुला सकते हो, आप खुद भी कॉन्फिस्केट कर सकते हो उसकी विप। आप उसको बताओगे, ज्यादातर तो जब आपको आपके लॉ की जानकारी होती है और आप उनसे बात करते हो तो उनको ऑटोमेटिकली उनको एक डर होता है, बिकॉज दीज आर पीपल जो या तो अनजाने में कर रहे होते हैं या फिर दे आर डूइंग इट क्योंकि किसी ने उन्हें रोका नहीं है। अगर मालूम भी है कि हाँ ये इलीगल है तो किसी ने रोका नहीं है तो करते जा रहे हैं। बट आप रोकोगे तो एटलीस्ट मेरी नॉलेज में मेरे वॉलंटियर्स या मैंने खुद कभी भी किसी को रोका है तो वी हैव नॉट हैड टू फेस दैट प्रॉब्लम। Always we could confiscate the whips or bits, we could free the animal. आप भी कर सकते हो। ऑलवेज आपको जहां भी लगता है कि सिचुएशन मुश्किल हो रही है 112 को जरूर कॉल करिए। 112 भी काफी सेंसिटाइज किया जा चुका है। अगर 112 आपका मदद ना करे तो भी आप 112 को वापस से कॉल करके खुद उनकी टीम के खिलाफ आप उनको कंप्लेन कर सकते हो। दैट्स समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो, कि 112 आता है और उन्होंने तो उल्टा हम ही को डांट दिया, वो हम ही को कहने लगे कि अरे वो अपना काम कर रहे हैं, आप क्यों बीच में तंग कर रहे हो उसको। आप 112 को वापस मिलाओ, और जो फोन वहां उठाते हैं दे आर ऑलवेज मोर सेंसिबल पीपल, आप उनको इन्फॉर्म करो इस सेक्शन का, इस एक्ट का ये उल्लंघन है। और जो आपकी टीम आई है, आपकी टीम उल्टा मुझे ही बोल रही है, सो कैन यू प्लीज कम्युनिकेट बैक टू योर टीम कि ये कानून का उल्लंघन है और वो एक गैर कानूनी एक्टिविटी को संरक्षण दे रहे हैं। दे विल ऑलवेज रिपोर्ट बैक एंड ट्रस्ट मी, अ बिगर एक्शन विल हैपन। आपके थाने की पुलिस को बोला जाएगा और थाने की पुलिस आएगी तब। सो दैट्स दैट। देन कोई भी अपने एनिमल को अगर वो उसका पेट पेरेंट है, आई लाइक टू यूज द वर्ड पेट पेरेंट, यहाँ पे ओनर लिखा है, दे यूज दैट इन द एक्ट। सो अगर वो उसका ओनर है और वो किसी बीमारी से ग्रस्त है और वो उसे सड़क पर छोड़ देता है, अगेन दिस इज उल्लंघन ऑफ सेक्शन 11 पीसीए एक्ट। ऑल्सो उल्लंघन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पीसीए एक्ट, जो डिफाइन करता है कि अगर आप ओनर हैं किसी एनिमल के तो आपकी ड्यूटी है कि उसको किसी कष्ट से और किसी प्रॉब्लम से, किसी हार्म से बचा के रखें। ओनर की डेफिनेशन यहाँ पर ये भी है कि इट्स नॉट जस्ट द लीगल ओनर ऑफ द एनिमल, इट इज एक्चुअली द कस्टोडियन ऑफ द एनिमल। अगर आपका एनिमल लेके, आपका पेट डॉग लेके एक वॉकर लेके जा रहा है बाहर, लेट्स से कि आपका हाउस हेल्प है, वो उसको टहलाने के लिए लेके जा रहा है और वहां पर वो कुछ ऐसा करता है जिससे उसे कष्ट पहुंचे जानवर को, तो उसके ऊपर सेक्शन 3 का भी उल्लंघन लगेगा। इवन दो ही इज नॉट द लीगल ओनर, बट वो उसका कस्टडी जानवर का उसके हाथ में है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सिमिलरली आप क्रैश में रखवाते हो अगर आप अपने डॉग्स को, वो भी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका लीगली ओनर होगा, क्योंकि वो कस्टोडियन है। ओनर आप ही रहोगे बट वो कस्टोडियन है, हेंस द ड्यूटीज ऑफ ओनर उस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 11 के अलावा सेक्शन 3 भी लगेगा उसके ऊपर। So all these cases जहां पे आप देखते हो कि बीमार गाय को, बीमार घोड़े को बाहर छोड़ दिया क्योंकि इलाज नहीं कराना चाहता है, आप उनके ऊपर सेक्शन 11 सब सेक्शन J ऑफ पीसीए एक्ट, इसका उल्लंघन आप लगा सकते हो। देन अपने पोजेशन में कोई भी एनिमल है जो
किसी तरह से उसका अंग भंग हो गया है, वो भूखा है, थर्स्टी है, किसी भी तरह का इल ट्रीटमेंट है, इसको अपने पोजेशन में रखा हुआ है उसने, तो ये भी सेक्शन 11 का उल्लंघन है। इसको सेल के लिए ऑफर करता है तो भी विदाउट अ रीजनेबल कॉज, तो भी ये सेक्शन 11 का है। अगेन म्यूटिलेटिंग, मेमिंग, किलिंग, जो मर्सी किलिंग करवा दी जाती है, ये भी सिर्फ दो ही तरीके से मर्सी किलिंग कराने के लिए प्रावधान है। इट इज नॉट इवन देयर फॉर अ रैबिट डॉग, सस्पेक्टेड रैबिट डॉग। पागल कुत्ते का सस्पेशन होना ऑलमोस्ट फाइनल हो जाना, मतलब कंफर्म कर दिया कई डॉक्टर्स ने, तो भी उसकी मर्सी किलिंग नहीं की जा सकती है। What has to be done is there are only 2 cases जहां पर mortally wounded, मतलब fatally mortally wounded and fatally ill. आप ला इलाज बीमारी में वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां वो एक्सट्रीम सफरिंग एंड्योर कर रहा है, तो उसकी पेन से खत्म कराने के लिए उसको आप मर्सी किलिंग करा सकते हैं। या वो किसी एक्सीडेंट में या किसी ऐसी इंजरी में आ गया है कि वो बचाया नहीं जा सकता है, ऐसा एक्सीडेंट हो गया लेट से किसी एनिमल का जहां उसकी आंतें बाहर निकल आई हैं, बस वो कुछ आधे घंटे में 1 घंटे में मर जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल टू सेव दैट एनिमल, बट वो उस 1 घंटे की सफरिंग को कम कराने के लिए आप उसको mercy killing करा सकते। Only these 2 situations. Other than this, there is the mercy killing, whether done by vet, whether done by a paravet, it is all illegal. Or even if it is done by a government veterinary officer belonging to a nagar nigam, इनको भी जानकारी आप रखो और इनको लॉ की जानकारी आप बताओ, जो इनको होती है पर कन्वीनियंट नहीं होता है तो ये उसे बहुत ही कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। आप याद दिलाएंगे तो इन चीजों को होने से आप रोक पाएंगे। देन आप किसी भी एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए या एज अ बेट फॉर डॉग फाइट्स आप किसी भी जानवर को यूज नहीं कर सकते हैं, आप कन्फाइन नहीं कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स जब बिग कैट्स हमारे शहरों में आ जाते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आज भी बेट के लिए डॉग्स यूज करता है, बट every single time this is reported, every single time someone reminds them कि hello, this is not allowed, आप जो कर रहे हो ये गैर कानूनी है, they have to remove the dog. ऐसा नहीं है कि उन्हें जानकारी पहले नहीं होती, बट कन्वीनियंट है इसलिए यूज करें, आप याद दिलाओगे तो उनको हटाना ही पड़ेगा। Then entertainment, animal fighting, we've already covered that. किसी भी तरह की एनिमल फाइटिंग नहीं कराई जा सकती है, चाहे वो कबूतरबाजी हो, चाहे वो मुर्गाबाजी हो, जहां मुर्गों को लड़ाया जाता है, कबूतरों को लड़ाया जाता है, जहां डॉग्स को लड़ाया जाता है। आजकल डॉग फाइटिंग हरियाणा, पंजाब, ये सब जगह है। I'll come later to that if I get time. उसमें सजा का प्रावधान भी है और उसमें ज्यादा इसमें भी कवर हो रहा है, बट उसके लिए एक अलग से भी प्रावधान है जिसको if time permits I will cover. बट ये सारा कुछ इलीगल है। शूटिंग मैच कंपटीशन के लिए कबूतरों को, लाइव कबूतर्स को उड़ाया जाता है, वो भी, all of this is completely illegal. Penalty. Now, here's something, penalty you can read on your screen. It is not too much, but, and इसका बहुत complain किया जाता है. Here's something that I would like to say. जब penalty, it is, the bill is already there. प्राइवेट मेंबर बिल से इंट्रोड्यूस किया गया है, इस पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी, गॉड विलिंग, ये जल्दी से पास हो जाएगा, जिसमें पेनल्टीज भी बहुत अच्छी तरीके से रेज करी गई हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग, लेट मी टेल यू कि इट इज नॉट अबाउट 50 रुपीज, 10 रुपीज, 100 रुपीज का फाइन। इट इज अबाउट
कि किसी ने उन्हें रोका नहीं है आज तक। आप लोग अक्सर बोलते हो कि क्या फायदा है एफआईआर फाइल करके भी 50 रुपए दे के तो वो निकल ही जाना है। बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि उसको थाने से बेल मिल जाएगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब होता है उसे कोर्ट से बेल मिल जाएगी। बेल हर हालत में मिलेगी, बिकॉज बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस द कोर्ट डिसाइड्स टू रिजेक्ट द बेल, वरना बेल मिलना इज अ मैटर ऑफ राइट। आप किसी का इंसान का खून कर दो, आप किसी का रेप कर दो, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट आई मीन दे इनवाइट द स्ट्रॉन्गेस्ट पेनल्टीज, येट बेल उसमें भी मिल जाती है। सो डू नॉट क्राई एंड फ्रेट ओवर इट कि बेल तो उसको मिल गई। थाने से बेल मिलनी है, मैजिस्ट्रेट से बेल मिलनी है, लेकिन बेल तो उसको मिल जानी है। बट that's not going to hold you back कि आप सिर्फ इस वजह से कि उसको बेल मिल जानी है आप उसको रिपोर्ट मत करो। दूसरा चीज कि बहुत कम फाइन लगना है, इवेंचुअली इतना कोर्ट की बैटल लड़ने के बाद उसको इतना कम फाइन लगना है, तो हम क्यों लड़ें? आपको लगता है कि कोर्ट की जो वकील की फीस होती है वो 50 रुपए होती है? नो। We also know, off the record, nobody is hearing me say this, but we all know that जब पुलिस के पास केस जाता है तो पुलिस भी काफी अपना भी भला करती है। पुलिस उसको परेशान भी करती है, पुलिस अपना भी भला करती है। तो एज अगेंस्ट अ केस जहां लेट अस से कि किसी इंसान ने किसी कुत्ते को मार डाला और किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहा, अगेंस्ट दैट आप इसको कंपेयर करो कि उसको 50 बार थाना जाना पड़ेगा, उसे अपनी जेब से काफी पैसा ढीला करना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस को शांत करने में हो, चाहे वो वकील के लिए जाए। जो 50 रुपए का फाइन लगेगा वो तो बहुत बाद में लगेगा, उसके पहले ही वो इतना सफर कर चुका होता है कि वो दोबारा जिंदगी में कभी नहीं करेगा। So our idea is to stop cruelty on animals. Let's not get into the nitty-gritty and pin the blame on law system, on the administrative system, on the NGOs, and आप action लो, आप cruelty को रोकोगे, that is guaranteed. Then एक बहुत बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि जब हम एफआईआर फाइल करने जाते हैं तो अक्सर मैंने देखा है लोग 428 एंड 429 को साथ में फाइल कर देते हैं। 428 एंड 429 इज एक्चुअली एन आइदर और सेक्शन, मतलब आइदर 428 लगेगा और 429 लगेगा। लेट्स सी, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स सेक्शन 428 और 429 क्या कहता है। नाउ सेक्शन 428 कहता है कि अगर आप किसी जानवर को मार देते हो, अंग भंग कर देते हो, मेमिंग ऑफ एन एनिमल, इसमें किलिंग, पॉइजनिंग, मेमिंग, रेंडरिंग मतलब अपाहिज बना देते हो उसे, रेंडरिंग यूजलेस ऑफ एनी एनिमल। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट, वैल्यू ऑफ 10 rupees or upwards shall be punished with imprisonment or either description of a term which may extend to 2 years or with fine or with both. मतलब आप 429 में आओगे, essentially the same thing, बस इसमें ऊपर एक ऐड कर दिया है कैटल एक्सेट्रा, बाकी सब कुछ सेम है, मेमिंग, किलिंग, पॉइजनिंग, रेंडरिंग यूजलेस एनी एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, म्यूल, बफलो, बुल, काउ, ऑक्स। अब आप जब ये लेके जाते हो तो यूजुअली पुलिस आपसे कहती है कि आप डॉग का केस लेके आए हो, 429 में तो ये बुल, ऑक्स, एलिफेंट, बफलो, हॉर्स ये लिखा है। तो आप उनसे बोलो सर आप इसके थोड़ा सा आगे पढ़ो, और whatever may be the value thereof of any other animal of the value of 50 rupees or upwards, यानी कि either elephant, camel, horse, mule, buffalo, bull, cow, ox हो जो कि किसी भी वैल्यू का हो, या फिर अन्य कोई भी जानवर जो 50 रुपए के मूल्य से ऊपर हो। सो आपका 428 लगता है 10 रुपए से वैल्यू के कम के जानवर पे, और 10 रुपए से कम के वैल्यू का कोई जानवर नहीं होता है।
या फिर 429 लगता है किसी भी जानवर पे जो 50 रुपए के मूल्य से ऊपर हो, तो हम हमेशा 429 यूज करते हैं, क्योंकि इसमें टर्म इज अप टू 5 years of imprisonment. 428 में अप टू 2 years of imprisonment है. नाउ जब आप थाने में बैठोगे और आप उनको कन्विंस करोगे कि नहीं आप 429 लगाओ, पहली चीज तो आप अपने कंप्लेंट में 428 429 लिखो ही मत, वो हमेशा कोशिश करेंगे 428 यूज करने की, अगर आप ऑप्शन दोगे उन्हें तो, वरना आप 429 ही लिख के दो अपने कंप्लेंट लेटर में, तो वो 429 को ही स्टडी करेंगे, दे विल ओनली स्टडी 429. 429 स्टडी करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप तो स्ट्रीट डॉग का केस लेके आए हो, कम्युनिटी डॉग है ये 50 रुपए का, इसका वैल्यू कौन बताएगा कि 50 रुपए है कि नहीं है, तो आप उनको ये बोलो, दिस इज अ लॉजिक दैट वी यूज्ड ऑलवेज एंड दिस हैज बीन एक्सेप्टेड ऑलवेज. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ जो आपकी है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन अमाउंट ऑफ 445 रुपीज सेट असाइड करती है हर स्ट्रीट डॉग के स्टेरिलाइजेशन के लिए, बाकी का इक्वल अमाउंट आपके स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है, और उसको हम छोड़ भी दें, हम स्टेट गवर्नमेंट्स पे जाते ही नहीं है, हमारा पर्पस ऑल ओवर इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू AWBI gives an amount of 445 rupees for sterilization of every dog. तो अब इसकी वैल्यू, जितना इन्वेस्टमेंट होता है, एक पैरामीटर होता है कि आप किसी चीज की कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं, अगर वो बिक नहीं रहा है मार्केट में तो जितना उस पे इन्वेस्टमेंट होता है उतनी उसकी मिनिमम वैल्यू पकड़ी जाती है. तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसके लिए 445 रुपीज सेट असाइड करके रखा है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू तो 445 हुई, इसके ऊपर से उसके इलाज का भी खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, उसको भी हम नहीं पकड़ते हैं. तो हमारा ये 50 रुपीज का जो डिमार्केशन पॉइंट है, ये हम इजिली इससे कवर कर लेते हैं एंड इट इज ऑलवेज एक्सेप्टेड. सो आप 429 ही यूज करो, 428 मत यूज करो. कोई जानवर या तो इतने मूल्य से नीचे का होता है या उससे ऊपर का होता है. डू नॉट कंफ्यूज इन दिस पॉइंट, यूज 429. Now we come to a point I'm sorry to intervene. We are also getting a request from our participants to use more of English as they don't understand Hindi, a lot of them. Okay, I was told to use more of Hindi actually. So I was trying to use more of Hindi. Anyway, so okay, I will try to use more of English now. So before I come to the other sections, there is a very important term, cognizable. You must be hearing this term, cognizable offense and non-cognizable offense. So what is cognizable and what is non-cognizable? Section 11 is non-cognizable. Section 429 is cognizable. Cognizable is an offense जिसके लिए FIR has to be filed. The police has to take cognizance. The police has the authority to arrest a person without taking warrant from magistrate. It can arrest, the police can arrest a person. Court order is not required to start investigation. Now, which offenses are cognizable? Thus, the more serious offenses are cognizable. Non-cognizable क्या होता है? Non-cognizable are जो less serious offenses हैं, they have been kept under the category of non-cognizable, like किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी ने forgery कर दी. So now these offenses आप देखते हो, the civil nature के जो होते हैं usually, they are taken to the magistrate, not to the police. However, I'll again clarify one point over here. Now, a cognizable offense has to be registered by police. Your complaint has to be taken and it has to be converted into FIR. Non-cognizable offenses के लिए भी, it is a misconception that non-cognizable offense को आप अकेले में, सिर्फ non-cognizable को आप पुलिस के पास नहीं ले जा सकते. It's not like that. Police has to make an entry in their DD and they have to conduct an investigation, and within a time period of 15 days they have to file a report whether the matter which was reported to them is worthy of filing an FIR
or should it be sent to the magistrate? Okay, so ये report उनको 15 days में, exceptional cases में up to 6 months, ये उनको फिर भी non-cognizable में करनी है. But practically देखा ये जाता है कि when you approach the police with a non-cognizable offense, which means only section 11, not killing has not happened, maiming has not happened, rendering useless meaning apahij ban gaya, that has not happened. So in that case only section 11 is applicable. आपका 429 is not applicable. Let's say किसी ने पानी फेंक दिया, पानी फेंक के तंग कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है, आप उसका भी वो क्रूरता तो है, it is cruelty, so FIR can be filed, should be filed, but it is a non-cognizable offense. So what do you do now? Here we use a thumb rule. The thumb rule is that any person who is being cruel or torturous to an animal, like I said earlier, he's not going to be a nice and kind person. He's obviously going to be a cruel, a bad person. When you go and talk to that person, the first thing in any case, you will obviously intervene, and you would try to stop that person from doing whatever he's doing. At that moment, you're not going to wait for 3 days or 2 days when it'll take to file the FIR. So whenever you are going to intervene, this person is going to turn around and say some nasty things to you. He is going to tell you कि ऐसा है, यहाँ से तुम चले जाओ वरना तुम्हें भी मैं देख लूंगा, जो अभी इसका कुत्ते का हाल किया है वही तुम्हारा भी हाल करूंगा, खबरदार जो तुमने बीच में आए. You dare not intervene, you go mind your own business, I am going to do this. Something like this. आपको harass करेगा, आपको intimidate करेगा. These sections are also there in IPC. They are cognizable offenses. So then in our complaint, along with section 11, we use these sections, which then will make the complaint eligible to be registered for FIR and eligible for taking action under cognizable offenses. So what are these sections that we can use? 503 of IPC is criminal intimidation. If anybody is stopping you from feeding, if anybody is threatening you, किसी भी तरीके से आपको harass करें, आपको threaten कर रहे हैं, आप, what is intimidation? You are feeling intimidated, right? किसी ने कुछ भी कहा जिससे आप intimidated feel कर रहे हो. Now that will qualify for section 503. Then there are other sections that we use. Section 504, अगर उसने गाली गलौज करी है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, if he is using language, if he's using cuss words, आपको गालियां दे रहा है, that is 504. अगर आपको जान की धमकी दे रहा है, if he is saying, if he has said something to the effect of that, get lost or I'll kill you also, that is 506. Okay, so 503, 504, मतलब 503 criminal intimidation, आपको किसी भी तरह की धमकी. 504 is अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली गलौज करना, and 506 is जान की धमकी आपको दे रहा है. All these three are cognizable. They're very serious sections. Use them. If you happen to be a girl, a female, and they are harassing you, you have other sections also which you can use, which are there for extra protection of females. Because usually they do try to take advantage of feeders, of people who are females, because they can't turn around and they can't punch around. So they try to intimidate you, taking advantage of your gender. Then use the laws that are there to empower your gender. Okay, feel free to use them. We come to that.
जैसा मैंने पहले कहा था, Section 3 of PCA Act talks about the duties of a person who is in charge of any animal, not to be mistaken with the legal ownership. It is the custodian or the person in charge of the animal. To take all reasonable measures to ensure the well-being of such animal and to prevent the infliction upon such animal of any unnecessary pain or suffering. I think I've already covered a lot about this. Your creches, your walkers, even the vet. If your dog is admitted and he's in the custody of a vet or a shelter or a hospital, they too will be violating Section 3 if they are subjecting your dog or whatever animal, cat, anyone, to unnecessary pain or suffering. Then your constitution empowers you to take care of animals. People cannot stop you from taking care of animals because this is what our constitution says, and constitution is the spirit. Constitution के ही basis पे सारी laws बनती हैं. So Constitution Article 48A says that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. Whenever your state tries to cut down for any function or any new construction or something, they are trying to cut down forests, they are trying to do anything for the wildlife, you can always use Article 48A. Article 51AG, this is extremely important. It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. Now, this covers everything that you can possibly feel for. It is the duty. जैसे आपके fundamental rights होते हैं, वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं. हिंदी में इट इज कॉल्ड आपके संवैधानिक कर्तव्य. आपके संवैधानिक अधिकार होते हैं, आपके संवैधानिक कर्तव्य होते हैं. फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. So nobody can stop you from carrying out your fundamental duties, because this is what the Constitution has imposed upon you, to carry out these duties as a citizen of India. This includes your taking care of well-being, your improving the natural environment of every living creature, which includes dogs, cats, horses, birds, everyone, monkeys, everything. So this is one thing you can always use. More than police, जो constitution होता है, this is more effective when you are dealing with administration, when you're dealing with the DM, anybody, any IS, like there are IPS and there are IS. For IS, because police moves on IPC, Indian Penal Code, and CRPC, right? उनको बहुत ज्यादा इसके आगे पीछे समझ नहीं आता है. वो कहते हैं लॉ दिखाओ, मुझे कौन सी लॉ का उल्लंघन है वो दिखाओ. But when you approach an IS, you show them the constitution articles and they are going to be very, very receptive about it. You will get more response from an IS officer if you talk about constitution. So this Constitution Article 51 AG is to be used in courts and with administrative officers. Then Article 51 AH says, it shall be the duty of every citizen to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. Okay, so we use these for every action that we need to take regarding animals. I think I have overshot my time by 10 minutes. I'm so sorry. Let's Vartika, can I quickly hand over the thing to you?
Varnika, sorry. Thanks, Kamna. Kamna, you can stop sharing the screen. Yes. Yes. Thank you, Kamna. Thank you so much for the wonderful discussion. So, hello, everyone. I will be sharing the next part of the webinar today, which is regarding the feeding of street dogs and the adoption procedure. So time is short, so I will really keep it crisp. And in the light of, the feeding of street dog issue, we will speak in the light of the Maya Chablani case, which many of us are aware about. Yes. So, and that what had happened, that it was passed on 24 June 2021, and everyone was so happy because such good observations were made in this judgment. And later on the next year, or on 4th of March 2022, stay was granted on this judgment. So what exactly happened and what was said in this judgment, I will start with it in really short. So the issue in this case was between two private parties, Maya Chablani and Radha Mittal. So Radha Mittal, was feeding stray dogs in the locality, which is Indrapur, New Delhi. And Maya Chablani had problem with that. She was saying that Radha Mittal is, feeding the dogs in front of my house and all those things. So she moved to court for the injunction against Radha Mittal. And in the court, when court saw that, such issues are actually increasing day by day, so what happened, with the help of the AWBI council and a friend of the court, which is called amicus curiae or friend of the court, a settlement was made wherein a point was marked, or feeding site was marked, and a time was given that you can feed between 6 to 8 a.m. and 7 to 10 p.m. So this was the only dispute in this case. Other than that, court saw, that it's a grave issue which is coming to courts regularly. So also court made some observations based on the written submissions of the councils. So really good, observations were made here, which was said that, animals too have a right to be treated with compassion. Every person has a right to show compassion, love and affection towards animals. Or community dogs, that is stray dogs, have the right to food, and citizens have the right to feed community dogs. And while exercising this right, they should be, they should take care, caution, and ensure that they are not impinging upon the right of others. Also, some observations were made, like there should be a stray dog census program, and court also observed that more people should indulge in, adopting rather than buying a dog. So all these observations were made, and the major finding of the court in this case was that what court says, so that it is the duty and responsibility of the resident welfare associations or municipal corporation. If RWA is not there, only then municipal corporation. Otherwise, it is the duty and responsibility of the RWA and other government authorities that, there is no hindrances caused to the caregivers or feeders of the community dogs. It is the duty and obligation of every RWA or municipal corporation, again, if there is no RWA, to ensure that every community dog in every area has access to food, water in the absence of caregivers. And the landmark thing which was said in this judgment is this, wherein court directed RWAs, and where there is no RWA, the municipal corporation, to make an animal welfare committees within the RWA. So what will these animal welfare committee do? They will be responsible for, compliance of the Prevention of Cruelty to Animals Act, and ensuring harmony between the people who are giving care, who are giving food to dogs. And also this committee will see that there is no cruelty towards the dogs, or there is no harassment of the dog feeders, or even the feeding has been done properly. The feeding is not negligent. So this is the major thing in this case.
which was stayed by the Supreme Court. Now, why was it stayed? Before coming to that, the court also in the case constituted a committee. The members of this committees are the Director of Animal Husbandry, Senior Officer of Municipal Corporations, one Senior Officer from Delhi Cantonment Board, one Senior Officer from AWBI, the Additional Standing Council of Government of NCT, and AWBI Council, and the amicus curiae, Mr. Pragyan Sharma. So they are the part of this committee. Why is this committee has been formed? This committee has been formed to look that the directions given by the court to make the animal welfare committee within the RWA that is implemented. So this is the implementation committee, and this work was actually going on. This committee was constituted and meetings were taking place. But what happened? There is an organization, Human Foundation for People and Animals. So they filed an appeal against this judgment, and they also got an interim stay on 4th of March of 2022. So when this stay was given, there was a lot of misunderstandings that people thought that now they do not have right to feed the animals. They cannot feed them. They do that their right is gone. So, but actually nothing of this sort had happened, because the major direction in this case, was to constitute the direction which was given by the court. So there is difference between directions and the observations. So court observed everything, that there is right to food, but it was not stayed. What was stayed? That now this implementation committee, which was working for making the animal welfare committee within the RWA, now that could not be done after this stay. But as people are legally not aware, so a lot of misconceptions were drawn, and by showing this stay, the people started to harass the dogs and the dog feeders. So therefore, several organizations, animal loving organizations, they intervened in this matter. Human Foundation in the Supreme Court, and also FIAPO intervened. And I was there present in the court at the time of the hearing. The hearing took place on 19th May 2022. FIAPO's intervention application was taken up, and the other applications were also taken up as to see what is the issue exactly, what is going on. And we told the court, we told the honorable judges that this stay is arbitrary, and the court was actually misled to put this stay, because they were not given the clear picture actually what has happened. And then it was also updated to the court that already there was cruelty which was going on. People were already reluctant how to feed dogs, so that their neighbors are not disturbed, and dogs are also feeded. But after this, actually the harassment increased, and people were taking advantage of it. So all these things were told to the court, but the stay was actually vacated. But the point on which it was vacated was actually technical. So Maya Chablani versus Radha Mittal, as you will see, both these are private parties. So it was a civil suit. It was not a PIL which was filed. It was not a writ petition. It was a civil suit. So civil suits are of a private nature between two people, plaintiff and defendant. So this Human Foundation for People and Animals, they actually had no locus standi to appeal against this civil suit, which was between the two parties. The Human Foundation had nothing to do with it. So this is the line: since the matter was relating to a controversy which had arisen as a result of dispute between the private parties, the applicant had no locus standi in the matter. We therefore dispose the SLP and vacate the interim stay dated 4th March. So this is how this interim stay was vacated, and and now, though earlier also the feeding was not restricted, but now freely everyone can feed the animals. And also now this implementation committee can work, and the
now legally we can pressurize resident welfare associations to make animal welfare committees. And also regarding street dogs, this is not the only judgment which talks about right to food to animals. So there are AWBI guidelines. There is Nagaraja judgment. There is our Indian Constitution. There are international WHO guidelines which talk about a right of animals. So if you are having difficulty in feeding the animals in the society, you can always quote these guidelines, these judgments. So this AWBI guideline dated 26 Feb 2015. So first part is for the caregivers, those who are feeding. What is their duty? So they should, they are advised to participate. If they are feeding, they are also advised to participate in their sterilization and yearly vaccination. Why? Because they have already won the trust of the dog. Because they are feeding, they love this animal. If they are not going to do it, then we cannot depend on others that they will do it. So that is why it is written here. And they are also advised to assist animal welfare organizations. Assist kis tarike se? In sterilization and vaccination program they can also assist. And then caregivers are advised not to feed street dogs close to residences. आप किसी दूसरे के residence में, किसी के घर के सामने, do not feed like this. Only or if there are children, if there is old people in a crowded place, do not feed there. And try to always feed in a secluded place or near to your house only, where it's a good thing that you are feeding, lekin do not create a problem or nuisance for the other person. And also while you are feeding, do not do littering. Feed karne ke baad clean the area and everything. And of course they are advised for the sterilization and vaccination of dogs. And also after the sterilization and vaccination, they should if they can, they should update. They should have a table that these dogs are sterilized, these are vaccinated. Why? It's not mandatory, but if they are doing it, it will be helpful for the local authorities. It will be helpful. We can say, see that these dogs are sterilized, these dogs are vaccinated, they are not going to create any diseases. Nothing will happen. Their hormones are okay. So you can say all these things. And also it will if you are together working with any animal welfare organization, or if you are working with municipal corporation, so these details helps. So if you're doing it, you can keep a data of it. So moving ahead, now these guidelines talks about street dogs कि उनके साथ क्या नहीं करना चाहिए. First of all, you cannot beat them, as Kamna told you about the PCA Act. You cannot beat them, you cannot drive them away, and as per ABC rules, they cannot be even relocated. They have to be there. Sterilize karne ke liye, if they have gone to municipal corporation, then they have to be taken back to the same place, because dogs are territorial animals. And there is no law which prohibits feeding street animals. Please make sure of it. ऐसी कोई भी law नहीं है. If someone is asking कि आप गलत कर रहे हो, आप feed करके street animals को, तो so just tell them that this is your duty under the constitution and you can actually feed them. And nobody can stop you, but feed in the manner like given in the guidelines. And also, if you are feeding animals and people come to harass you, वो आपको धमकी देते हैं, and कि do not do, मैं ये कर दूंगा, they attempt to interfere. So actually this is also an offense under section 503 of IPC, which is called criminal intimidation. You can complain about it, but I will always say, even as a lawyer, I will always say, always try to mitigate the matter first. The legal thing should be the last option. And also we should we should tell people politely ki how they should behave in front of a community dog. Because if a dog is snapping or if a dog is biting you, so generally he's doing this in his self-defense, because he has seen hostility and aggression from your side first. So if you behave your behavior, dog will automatically change the behavior, and he will
stop snapping and biting. So these things have to be keep in mind. So these were the guidelines of 26 to 15 of AWBI. Then AWBI recently on 12 July 2018 also they sent advisories to all the chief secretaries of the states, and in this advisory उन्होंने बताया chief secretaries को कि what is the responsibility of the local bodies, that it is the responsibility of local bodies to provide shelter, water, food, medical facilities to stray animals. And from where these duties are coming? These duties are coming from the Indian Constitution and also Section 3 of the PCA Act, which has already been discussed. Now coming to the constitution part, I think Kamna has already dealt with this part and we are also short of time. So I am not going into the fundamental duties and DPSPs, but I would just like to say about the fundamental right, Article 21. So Article 21, when in the constitution, when it was put, it was only the right to life. Article 21 is right to life. It was only given to the people. It was not given to animals. But after the Nagaraja judgment in 2014, it was quoted that while safeguarding the right of humans, protect life, and the word life has been given an expanded definition. So word life को एक expanded definition दिया गया, and any disturbance from the basic environment which include all forms of life, including animal life. तो इसमें animal life भी आ गई. Now even the fundamental rights, even animals have their fundamental rights. So what is the difference? तो fundamental right क्या होता है? आप you can get it enforced in the court. और जो आपके DPSP हैं और जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आपके कर्तव्य हैं, ये आपकी मॉरल राइट है. दीज आर योर मॉरल ड्यूटीज दैट यू हैव टू डू इट, बट देयर इज नो पेनल्टी अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो देयरफॉर यू कैन नॉट गेट देम एनफोर्स. बस जो आपके राइट्स हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, दे कैन बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर राइट एंड द ड्यूटीज. So now even animals have right to life. और उसके बाद the last World Health Organization of Animal Health OIE, India is the part of the WHA and ये एक under these are the guidelines of World Health Organization of Animal Health. They have given 5 specific internationally recognized freedom for animals, जो कि है freedom from hunger, thirst and malnutrition, freedom for fear and distress, freedom from physical and thermal discomfort, pain, injury and disease, and normal patterns of behavior. Basically ये जो freedoms है ना, ये हमारे PCA Act के Section 11 में भी covered है. तो these are the actually basic right of animals. और ऐसा उनके पास ये right है, उनके पास, और मतलब अगर ऐसा कोई कर रहा है तो हम उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं. So now this was the part of right to food. Now coming to the last discussion, which is the adoption of community dogs. So lately on 17 May 2022, Animal Welfare Board of India, they have issued a standard protocol for the adoption. Okay, so many people have difficulty how to adopt stray dogs. उनको कैसे किया जाए? What is the legal solution? So AWBI has tried to formulate a तरीका कि ये कैसे कर सकते हैं. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है where can one adopt a dog? तो आप डॉग कहाँ से, कम्युनिटी डॉग कहाँ से कर सकते हो? नंबर 1, शेल्टर से कर सकते हो, SPCA के जो डिस्ट्रिक्ट सोसाइटीज हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में बनी है PCA एक्ट. और अगर आप वहां से लोगे देन दी SPCA दे विल इशू अ अडॉप्शन सर्टिफिकेट. सेकंड आप कहां से कर सकते हो? एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है AWBI से. अगर आप इनके शेल्टर से लोगे देन इवन मतलब जहां से आप ले रहे हो दे विल गिव यू अडॉप्शन सर्टिफिकेट. एंड इफ यू आर अडॉप्टिंग अ डॉग फ्रॉम द स्ट्रीट, अगर आप सड़क से कर रहे हो तो अब वो आप शेल्टर से तो कर नहीं रहे हो, तो वो कैसे प्रोसेस होगा? तो यू कैन गेट इट प्रोसेस्ड थ्रू म्युनिसिपल लोकल अथॉरिटीज जो होती है, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गांव में पंचायत जो होती हैं, और अदरवाइज इवन यू कैन टेक हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट SPCA. तो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये होगा कैसे? तो हम उस क्वेश्चन पे आएंगे. पहले तो आप कर कहाँ से सकते हो, और ऑल्सो इवन ये जो स्ट्रीट अडॉप्शन है ना, लाइक
don't think that the individuals are not covered. सिर्फ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और आप शेल्टर से ही ले सकते हो. अगर आप किसी डॉग को फॉस्टर कर रहे हो तो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हेल्प उसमें अडॉप्शन प्रोसेस में ले सकते हो और एसपीसीए की भी हेल्प ले सकते हो. नाउ अडॉप्ट कौन कर सकता है? अडॉप्ट करने के लिए एक तो आपको मेजर होना चाहिए, विच इज यू शुड बी 18 years old, you should be of sound mind, and you should be capable of providing adequate care and maintenance, न्यूट्रिशन, वेटनरी केयर, हाउसिंग. मतलब आप अच्छे से उस डॉग को रख सको. उस डॉग के साथ ऐसा ना हो यू हैव अडॉप्टेड हिम एंड बट यू आर नॉट गिविंग हिम यू आर नॉट एबल टू गिव हिम अ प्रॉपर केयर. ऐसा नहीं चाहिए. घर होना चाहिए, शेड होना चाहिए, वैक्सीनेट होना चाहिए, स्टेरिलाइज करो, उसको प्रॉपर खाना दो, उसको नहलाओ. ऑल दिस बेसिक फैसिलिटीज यू शुड बी एबल टू डू. सो देन यू कैन अडॉप्ट अ डॉग. अब अडॉप्ट करने से पहले मान लीजिए यू आर गोइंग टू अ शेल्टर, यू आर गोइंग टू AW और आप उनको बोलो कि मैं ये डॉग अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो वो क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए सबसे पहले तो है एक हाउस चेक फॉर्म. तो ये जो SOP आई है इसमें ही एक Annexure 1 प्रोवाइडेड है which I will show you after this PPT. And आपके पास एक वैलिड गवर्नमेंट फोटो ID एड्रेस प्रूफ यू शुड हैव. And in दोनों के बाद there is a separate form of adoption. So in this form you have to give details of yourself and the details of the dog. Okay, and house check. Now अब इस house check में क्या क्या होगा? तो हाउस चेक क्या क्या होगा और कैसे होगा? सो आप अगर आप इंडिविजुअल हो, आप किसी स्ट्रीट डॉग को इफ यू आर फॉस्टरिंग, सो you can give an ad कि मुझे अडॉप्ट कराना है, and then you yourself can go to the house of that person, or you can talk to SPCA, or you can talk to local authority to go along with you to check the house. Or and otherwise अगर आप shelter से ले रहे हैं तो the shelter person can go along with you to see the house. अब house check में actually देखना क्या है? house check में देखना है कि ये कि किस टाइप की बालकनीज हैं, किस टाइप की विंडो है, घर पे हवा आ रही है, कुछ ऐसा तो नहीं है जहां से अगर आप छोटा सा बच्चा लो, क्योंकि बालकनी से जनरली पप्स गिर जाते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. देयर इज नो शार्प और डेंजरस ऑब्जेक्ट्स नियर बाय. आप जहाँ पे पेट को रखोगे आप इस टाइप की चीजें छुपा के रखो, जैसे आप बच्चों से छुपा के रखते हो उसी टाइप से आप अपने पेट से भी छुपा के रखो. एंड दैट एज अ गाइडलाइन जब आप अडॉप्ट कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपको बताई भी जाएंगी फ्रॉम द शेल्टर. बेसिकली उनको बताना चाहिए कि कोई हार्मफुल प्लांट ना हो, कोई ऐसा केमिकल ना हो, कुछ इस टाइप की इंसेंस स्टिक्स ना हो जिससे मे बी पप को एलर्जी हो, कोई टॉक्सिक आइटम ना हो. और आप वेटरनरियन की गाइडेंस बार बार लें. कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फिटिंग्स कुछ ऐसी खुली हुई ना हो कि जहाँ पे डॉग एकदम आ जाए और करंट लग जाए. कंफर्टेबल बेडिंग हो, एक अच्छा स्पॉट हो उसके लिए. यू आर प्रोवाइडिंग cleaning water, there is enough space. और आपको फिर ये सब बताया जाएगा कि जो पर्सन अडॉप्ट कर रहे हैं कि उनको क्या क्या करना है अडॉप्ट करने के बाद, कि वैक्सीनेट कराना है, पैरासाइट कंट्रोल कराना है, डीवॉर्मिंग करानी है, वेट से चेकअप कराना है, एंड व्हेन द एनिमल हैज अटेन्ड मैच्योरिटी ही हैज टू बी spayed and neutered. So all these things will be checked and then you can adopt the dog. So I will just stop sharing of this PPT and I will just show you the form. And I know the time is shooting, but I just wanted to yes. So this is the form. ये SOP है और इसमें ये फॉर्म्स दिए हुए हैं. दिस इज द हाउस चेक फॉर्म. ठीक है. दैट आई हियरबाय गिव कंसेंट कि मैं उसको अच्छे से रखूंगा. I understand that this visit is for assessment, that he is understanding कि हो क्या रहा है, पर्पस क्या है. और ये अडॉप्शन फॉर्म है जिसमें नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर
जो अडॉप्ट कर रहा है उसका, और इंफॉर्मेशन अबाउट द अडॉप्टेड एनिमल. एंड यहाँ पे अंडरटेक भी कराया जा रहा है that he is understanding कि वो what is he doing, that he is adopting a pup and he has to take care of that pup. And also in the end I would just like to say कि ये जो form है, when you are signing it and everything to make it more legally enforceable, सिर्फ अडॉप्शन फॉर्म ना दें, इसको एफिडेविट पे दें 10 रुपीज या 20 रुपीज के जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे निकलवा के, so that later on it can be challenged also. So this was regarding the adoption and feeding of street dogs and the rights. So thank you so much, and over to Archit. Thanks, Varnika. Thanks, Kamna, for both the presentations. As we are running out of time, we'll quickly glance through the questions. And here's actually the first one. So we often face trespassing issues. For example, we know a dog being tied 24/7 in the parking somehow, but we have to enter his building to handle the issue. He will slowly say that you have entered the building without permission and turn the case onto us. What can be done in such a matter? Varnika, would you like to take it, or Kamna? Actually, I got lost in between, so that is why I'm silent. So, in understanding the question, if you can just repeat it once. Yeah. So basically, it's an issue of trespassing. So one of our participants has shared that they know a dog that is being tied 24/7 in the parking, but to enter the building, even help them or handle the issue, they have to trespass. So in such a case, what could be done? Because often when they try to trespass, they are in turn blamed for that. So for trespassing, so what can be done? I think we should also know whose dog is this and why is he tied outside. So because if this dog, if he knows whose dog is it, if he's of a neighbor, someone, so if this is happening, maybe he can go to the neighbor and first ask them politely ki why is dog outside and you are not supposed to do it, you are the owner of the dog, and please take the dog inside because this is a cruelty which you are doing on the dog. And because the question is actually I think is half, and if they are in the night agar wo lekar ja rahe hain dog ko andar, so where are they taking the dog? It's a society? Is it a society? Is it clear? They have not mentioned it clearly, but they have mentioned the dog being tied in the parking. So I assume it's a society most likely, or a residential area in that case. तो सबसे पहले तो जिसका डॉग है उनको हमें बताना चाहिए कि you cannot do this. Politely हमें उनको बोलना चाहिए and this is cruelty and this is even an offense. If they are not ready to take the dog inside the home, तो उसके बाद AWBI को बताएं. We should try कि जो एकदम लीगल पार्ट है ना, पुलिस कंप्लेन, it comes to the end. जब कुछ और नहीं हो पा रहा है हम वो तब करें. So we can approach AWBI, we can approach state board, and उसके बाद अगर they are not doing anything, then make a complaint to the SHO citing section 11 of the PCA, क्योंकि उसमें ऐसे टाइट रखना और डॉग को अबंडन करना is an offense, and then take the action forward. All right, thank you, Varnika. We have another question from Pareen Sachdeva. So how can we use... Can I just add? Yes, add one little bit to this? Sure. To what Varnika said. Section 32 of the PCA Act, it empowers any police personnel above the rank of sub-inspector to enter and search किसी भी case में where he has substantial reason to believe that an offense of cruelty has been committed. So if you when you see that ऐसा कुछ case है, like Varnika said, you can first approach, and अगर आपको लगता है कि you must intervene right away, then go to the Thana and tell them that you are empowered under section 32 of PCA Act to enter and search. आप किसी के premises में enter कर सकते हो. This is correct. I never advise people
because trespassing ka case is a serious thing. Do not invite such actions on yourself. Immediately, agar bahut zyada urgency hai, then call 112 in their presence. You can go, because there is something called ATR, action taken report, which the 112 files. So it will be recorded over there. Always keep the recording on so that you have things in your favor. Any allegation कि आपने अंदर घुस के misbehave किया या ऐसा किया वैसा किया, वो सब आप पे ना लग सके, because everything is on record. You can ask anybody, any police officer above the rank of sub inspector to enter any premises. वो जा सकता है. So that's, yeah, the second question. Thank you so much, Kamna, for adding that part. Moving on to the next question. How can we use this broad definition of cruelty to work towards abolishing animal agriculture altogether? Would you like to go ahead? Okay. So this is actually a very, this I would say इसको short में answer करना बड़ा मुश्किल है. We'll have to actually keep another session for it, because animal agriculture is a completely different, मतलब बहुत उसमें जो rules use होंगे उसमें वो broadly, तो अगर मैं short में इसको answer करना चाहूँ तो आप conditions देख सकते हो. Under what conditions the animals have been kept. You can see whether the animals are being kept with cruelty. Do they have enough room, enough place to move around? Like I said, that is provided in section 11. आपको वो देखना है. Also, if we talk about dairy, अगर हम इसमें include करें, तो सबसे ज्यादा जो चीज यूज होती है वो ऑक्सीटोसिन यूज होती है. Now, oxytocin injections, I'm sure all of you know, oxytocin injections banned हैं. वो ऐसे without prescription बेचे भी नहीं जा सकते हैं. तो अगर आपको लगता है सब डेयरी वाले यूज करते हैं, आप स्टॉप करना चाहते हो, तो जो भी डेयरी को आप टारगेट कर रहे हो, आप बाहर जाके देखो, see, you will find these used vials, the injections, the needles, all of this you will find. These are sufficient proof that they are using. Then you can go ahead and file complaint. And Section 12 of PCA Act actually covers this, and it's a cognizable offense. सिर्फ Section 11 मत use करना, आप Section 12 भी इसमें add करना, because that again makes it cognizable offense. And there is a fine of up to 1,000 rupees and or a 2 years imprisonment. The animals will be forfeited and they will be given to the government अगर oxytocin injection use करने का आप कुछ भी evidence देते हो. And the shop which is selling oxytocin, उसका license immediately रद्द कर दिया जाएगा. His license will be cancelled. And मतलब pharmacist का जो license होता है, that will be cancelled. Criminal charges will be put, and up to 5 years of imprisonment for selling oxytocin injections. This is because Food and Drug Adulteration Act भी उसके ऊपर लगेगा. So these are broad things that we can do. Other than that, there is a lot we can do, but that will बहुत stretch कर देगा. So in short, this is what you can say कि अच्छे से कभी भी नहीं रखते हैं, अच्छा खाना कभी भी नहीं देते हैं, उनके पास movement के लिए कभी भी अच्छा space नहीं होता है. Use all of these things to your advantage and to file a case and to get it stopped. Thank you so much, Kamna. Moving on to the next question. There's a community dog and the people who feed her is not allowing her for sterilization. So in such a case, what could be done? For community dog, it's not an owned. No. You cannot. You do not have ownership of community dog. You're merely a caretaker. Even the AWBI, which issues the card for feeder, is of a caretaker. You do not like municipality में registration करवाते हैं. Registration is only for your own dogs, your
pet dogs, not for community dogs. आप community dog की ownership कभी नहीं ले सकते हैं, and it is mandatory for आपका जो भी implemented है program, आपका municipality with any NGO or something, they must be having some sterilization program which has been implemented. That has to take place. You cannot stop them. If somebody is stopping, then you approach your local municipal corporation. Usme the veterinary officer will be there. You approach and you tell them. Also, you can approach the SPCA or the DM. This is actually hindrance in government implementation of a government program. So that is how you should tell them that this is a government program which is being implemented, funded by the government, and this particular person, for whatever reasons he believes, is hindering the program, and they will take action, and the community dog has to be sterilized. Nobody can stop that. Okay, thank you, Kamna. Next, there's a question which says that my Masi feeds stray dogs and she has also given shelter to 7 dogs in her house. However, she is getting harassed by the neighbors. So what she can do to fix this? How can she be empowered in this case, actually? I'm sorry, she has adopted the dogs or she is only feeding? She feeds the stray dogs and also has given shelter to 7 dogs in her house. However, she is getting harassed for this by the neighbors. So what could be done to fix this? So let me first understand what is the meaning of giving shelter. A lot of times we do open our houses, most of us actually open our houses to the streeties. If it is raining, if it is very cold, if it is hot, they are allowed to, they have access, to our houses. If that is the meaning of shelter, then their status of them being community dogs does not change. And everything which is, which a community dog has right of, the same rights they will have. If she has adopted them inside their house, as in they are 24/7 there, and she only takes them out for walks, and she has a registration done for them, which means she has the legal ownership of the dogs. In that case, it is no one's prerogative to interfere in any case. आप अपने घर में क्या करते हैं वो आपका नेबर कैसे डिसाइड कर सकता है? Can you decide कि आपके नेबर के 4 बच्चे पैदा करे वो या 6 बच्चे पैदा करे? Just because you feel that दुनिया में बहुत population हो रही है and you believe कि इंसान के सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए, but क्या आप उसको restriction लगवा सकते हो? No. So how can he tell you how many dogs you should keep in your house, provided you're taking good care of them? You're not hoarding, as in, you're not being able to take care of them. You're not being able to keep them in a hygienic condition or provide enough food or whatever is required. आप Section 3 की अपनी duties को amply, sufficiently अगर आप conduct कर रहे हो तो nobody can tell you. And अगर वो सिर्फ shelter है जिनको हम semi pets कह देते हैं कभी कभी, अगर वो semi pets हैं तो in any case that's a noble thing that you're doing. Everybody in the they call community dogs. Everybody in the community has the duty of doing that. Now if they're not doing, तो आप सबकी तरफ से वो duty निभा रहे हो, आप तो वैसे ही hero हो, आपको कौन रोक सकता है? इसमें I would just like to add one thing कि maybe what she can do is ना, she can try to explain to people about this कि right है, there is nothing wrong in what she can do because people are harassing her. She should show, maybe we can share the AWBI guidelines with her और लोगों को पोलाइटली बताए कि मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, इनफैक्ट आपको भी करनी चाहिए. तो क्योंकि यू नो व्हाट हैपेंस, इस टाइप के जो इश्यूज हैं इन एंड जाके दे बिकम अ बिग इशू बिकॉज इट एंड्स इनटू फाइटिंग. दिस इज व्हाट हैपेंस. तो वो अच्छे से बताए कि ये गाइडलाइंस है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और मैं ये कर रही हूँ और आप मुझको रोकिए मत. So this is the best way that she should tell about the rights and duties to the people. I think so that they stopped harassing, or maybe if any animal volunteers can go and talk to the people. ये
the solution is baatcheet. The solution is discussion here, politely. So this is the way she can handle. Otherwise, the last recourse is anyways legal, which I don't think so will provide any solution in this case. Actually, Vanika, what happens is that usually such people, I'm talking from the point of view of feeders actually and caregivers, because we get these cases very, very often. ये सारा कुछ ये सबसे पहले कर चुके होते हैं. ये they are the kinder ones. The other party is the one who is more aggressive. They usually सारी इंसानियत की दुहाई दे चुके होते हैं, AWBI के लेटर्स दिखा चुके होते हैं, because that is what Facebook पे आप लिखते हो और आपको सबसे पहले ये सब कुछ दे दिया जाता है Facebook पे. So ये कर चुके होते हैं. But beyond that, what I always suggest is do not engage too much with such people, because like you said exactly कि बात फिर वहां से बहुत बढ़ जाती है. आप अगर यही AWBI की गाइडलाइंस और ये सब कुछ आप पुलिस को दिखा देते हो और वहां से एक कांस्टेबल भी आ जाता है और या आप 112 को भी बुला देते हो और उनको ये गाइडलाइन दिखा देते हो, और जब ये सेम चीज जो ये लोग स्वीट से प्यारे से लोग ये लोग इनको प्यार से बोलते हैं तो समझ नहीं आता, बट अगर वो ही बात पुलिस इनको बोल देती है कि आप इनको रोक नहीं सकते हो, ये इनका अधिकार है, तो समझ में आ जाता है. So it's a combination. Like Varnika said, don't get into a fight. Try जरूर करो. अगर काम नहीं कर रहा है तो multiple times मत try करो, वो काम करेगा नहीं. आप पुलिस के थ्रू वही बात कहलवा दोगे उनको. Exactly what Varnika said कि जो AWBI का गाइडलाइन है आप पुलिस को दिखा दो, उनके समझ में आ जाएगा, वो उनको समझा देंगे कि ये आपका अधिकार है, आप इनको नहीं रोक सकते. और उसके लिए आपको पहले थोड़ा पुलिस को भी समझाना पड़ेगा. And then that's the first point. Police is always the first education point is police only. आपको उनको वो AWBI का गाइडलाइन दिखाना होगा कि सर ये हमारा अधिकार है और ये हमें रोक रहे हैं. That will be solved. Thank you, Kamna. Thank you, Varnika, for sharing your insights with us. I would really like to take more questions, but we have run out of time. So I would like to request our participants to please mail your questions at mail@fiapo.org or archita@fiapo.org. And we will be sharing them with our panelists and we will get back to you on this. However, thank you so much, Kamna. Thank you so much, Varnika, and all our participants. With this, I would like to actually end the session and I wish everyone a very good weekend and take care. Thank you so much. Thank you, Kamna. Thank you, Varnika. Thank you everyone for joining. Thank you for joining.